हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवल शीट। दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट वीडियो और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दाव फेस्टिवल पर। ये कटारा में ऑर्गेनाइज होता है, हर साल ही तकरीबन होता है, लेकिन लास्ट ईयर नहीं हुआ था कोविड की वजह से। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं सदफ और ये मैं आतिफ। हम आपको लेकर चलेंगे स्टार्ट में कतर के डिफरेंट प्लेसेस पर और उसके बाद फिर यूरोप, टर्की एंड डिफरेंट And the ocean tides are getting bigger. So let's go and enjoy and watch the Dao festival. Let's go. Come on, let's go. It is the 11th edition of Dao festival, जहाँ 20 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं और शोकेस कर रही हैं अपना बोट मेकिंग एंड एंशिएंट क्राफ्ट, देयर कल्चर, देयर स्वीट्स और सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी नाइस फेस्टिवल जहाँ आकर आपको कल्चर और सबके बारे में पता लगता है और इफ़ यू हैव अ रियली कल्चर वाइब तो यू शुड विजिट दिस। यहाँ पर ओपन एयर है तो कोविड की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस ये कि मास्क आपको लगाना ज़रूरी है। एंड बेस्ट थिंग इज़ दैट इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन, देयर इज़ नो एंट्रेंस फीस, तो आप जाके फुल एंजॉय कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस। इज ऑलवेज एन अमेजिंग प्लेस टू बी। हल्की फुल्की लहरें चल रही हों, ठंडी ठंडी हवाएं हों, लाइव म्यूजिक चल रहा हो एंड यमी फूड। व्हाट एल्स यू वांट इन अ फेस्टिवल? Pearl diving was a big business in Qatar during the 19th century. The pearl industry made up of 75% of the Persian Gulf total export.
Until the 1940s, pearl diving also made up most of the Qatar economy and employed almost half of the population. यानी उनका सारा कारोबार जो है वो समंदर पर मुनहसर था. And that is the main resource for the people and the export. Qatar's pre-oil economy based on fishing, pearl diving, and all the ocean-related things. वो अपनी सारी ज़रूरियात समंदर से पूरी किया करते थे. कतर के बाद हम गए ओमान के स्टॉल पर. वहाँ उनका कोई ट्रेडिशनल हलवा तैयार हो रहा था और काफ़ी मकदार में तैयार हो रहा था. पता करने पर हमें बताया गया कि इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स टू मेक इट रेडी. तो हमने कहा चलें पहले दूसरी जगह घूम कर आते हैं एंड फिर आकर हलवे का मज़ा लेते हैं. वहाँ से थोड़े ही फासले पर लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंस चल रही थी तो हम बढ़े उसकी तरफ. स्टॉल्स पर घूमने के बाद हमने सोचा चलते हैं फूड स्ट्रीट की तरफ. वहाँ से लेते हैं कुछ चाय एंड सैंडविचेस और ट्रीट करते हैं अपने आप को. तो इसके साथ ही फिनिश होती है हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ दाव फेस्टिवल. होपफुली आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर ट्रैवल वीडियोस. एंड हे wait, there's a little surprise and a cute shout out for you, so wait till the end. This is all from the Dao Festival. If you like our videos, please subscribe and hit the bell icon. If you have any question, please place it in the comments and we'll see you in the next video.